प्रोसीजर है, हल्का सा सुन करते हैं और इम्प्लांट अंदर चला जाता है, दैट्स इट। ऐसे दिस इज हाउ आई टेल देम। आई ऑलवेज टेल देम कि ऑर्थोपेडिक में इतने बड़े बड़े रॉड्स डालते हैं फिट में, हिप में, एंड अगले दिन आप चलते हो, इट्स लाइक दैट, एकदम पेनलेस होता है, कोई ट्रबल नहीं। सो पहले से ही पेशेंट का ना एंग्जाइटी रिलीव करो रिगार्डिंग प्रोसीजर, बिकॉज आई कैन इमेजिन अगर मुझे खुद इम्प्लांट करना है मेरा, तो मैं भी एंशियस रहूंगा कि एनेस्थीसिया कैसे देंगे, प्रॉपर देंगे कि नहीं। सो दैट इज हाउ यू हैव टू स्टार्ट प्रोग्रामिंग पेशेंट्स माइंड। So we will repeat this again, that implant placement is very simple. Make a hole in the bone and put the screw. But there is lot of science involved around that screw. Okay, it's not any simple screw. Selection of case and prosthetic planning will do. That is called diagnosis and treatment planning. Then you will place your implant. That is what we will discuss now. Once it is done, tomorrow we will begin with prosthetic session. That you have placed implant, 2 महीना 3 महीना हो गया है, अभी आगे कैसे बढ़ना है, that will discuss tomorrow. सारे components, techniques, everything. And we'll also talk about maintenance and recall period. Recall period क्या होना चाहिए, implant के patient को generally कब बुलाना चाहिए, post treatment, कितने बार आना चाहिए patient clinic पे checkup के लिए, okay? That will discuss tomorrow. So again, dental implant is a prosthetically driven surgical component. I will repeatedly think about my prosthesis and accordingly I will place the implant. So the question is why I need to do precise implant placement or proper surgical procedure. Surgical procedure इतना important क्यों है? Apart from implant is a surgical component, but why surgical procedure should be carried out by keeping prosthesis in mind? What are the things that you want to achieve by doing that? क्या अचीव करना चाहते हो? First is I want to achieve aesthetics. If I place my implant wrong in anterior region, I will spoil entire aesthetics. If I do not place implant properly in posterior region, I will not able to load that implant properly and I will end up with open embrasure and then marginal discrepancies. Aesthetics is important, but at the same time I want to achieve function for posterior region. I have seen so many practitioners who have placed implant in posterior region and they always keep implant crown infra-occluded, thinking कि उसके ऊपर loading नहीं होगा. Even if you keep infra-occluded, there will be loading, but in that case, loading will be in the wrong area rather than giving it loaded. So never keep crowns infra-occluded because the whole and sole purpose of giving this treatment is going for a toss. If patient is not able to eat, what is the use of putting implant and charging them so much? So आप ऐसा मत सोचो, एक बार implant osseointegrate हो गया, don't think about the stress. Just give nice prosthesis, follow occlusion, nothing will happen. After aesthetic and function, and when it comes to posterior region, I never think कि aesthetic is restricted to only maxillary anterior. It is wrong concept. Although this is primary area where aesthetics is important, but aesthetics is equally important in posterior region. Just because posterior में important नहीं, इसलिए कुछ भी आप नहीं दे सकते हो माउथ में. You have to give proper prosthesis, okay, which is hygienic also, and that is why third thing that I want to achieve is hygiene. So that is why we follow a very standard protocol of implant level impression. We get a master cast and we design a prosthesis where I will have to maintain minimum. जब मैं मिनिमम मेंटेनेंस का प्रोसेसिस देता हूँ पेशेंट को, तो इट रिड्यूसेस पेशेंट जॉब एज वेल एज माय जॉब, बिकॉज पेशेंट आराम से मेंटेन कर सकता है जस्ट बाय ब्रशिंग ट्वाइस एंड ही विल नेवर हैव पेरिम्प्लांट प्रॉब्लम्स, बायोलॉजिक प्रॉब्लम्स. सो माय जॉब इज आल्सो रिड्यूस्ड and the longevity of that treatment will be durable. It will be durable and it will remain as a long-term treatment option. But when I am doing implants in maxillary anterior region, things are little tricky. I have to look for not only aesthetics but phonetics also. If it's a full arch case, I have to see to it that occlusion is given properly. Especially in full arch cases, we take teeth setting trial of the patient. There we check aesthetics, phonetics, function. Aesthetics देखता हूँ मैं, स्माइल लाइन कैसे है, प्रॉपर डिस्प्ले है कि नहीं, फोनेटिक्स पेशेंट का प्रॉपर आ रहा है, एंड फंक्शन. एंड देन उस टीथ सेटिंग ट्रायल को हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं एंड मेंटल फ्रेमवर्क का ट्रायल लेके उसके ऊपर लेयरिंग करते हैं. दैट्स अ डिफरेंट वर्क फ्लो ऑल टुगेदर. विल सी मेनी केसेस टुमारो. यू विल कम टू नो कि फुल आर्च केस में क्या प्लानिंग होती है.
Apart from occlusion, I am also concerned about function. After that, lip position is important for maxillary anterior region and the hygiene. As per ITI guidelines, whenever you are dealing with any anterior case and the moment patient smiles and it's a high lip line case, the case suddenly becomes complex. There is a SAC classification by ITI, simple advanced complex, SAC, SAC classification. As per that classification, any anterior case where patient has high lip line, that case by default becomes complex case, most complicated case. It's very challenging to restore such cases because you have to give excellent aesthetics. Otherwise, anyway, whenever patient smiles, there will be display of the tooth or prosthesis which is not proportional to adjacent tooth. It will look very ugly. What are the general principles of implant surgery? Selection of case is very important. That comes under your diagnosis and treatment planning. Second, preparation of the patient. And I believe preparation for surgery begins from first sitting itself. Mentally patient का preparation कैसे करना है? Tell them that procedure is painless, effortless है, simplified है. Don't portray कि कोई बहुत बड़ा आप surgery करने वाले हो. Okay, patient will run away otherwise. They will choose for or they will go for other option then if they are scared. Surgical or implant site preparation that we'll discuss one by one. And also important is one stage versus two stage implant surgery. I will talk about this. One stage कब होगा, two stage कब होगा. In patient preparation, always explain all the risk and benefit to the patient. Whenever I am dealing with any patient where bone is compromised or there are some other factors working against my case, I tell patient that there are chances of failure or I may have to modify the options afterwards. And I never hide anything that may happen in future from the patient. We always take patient's consent. He should be ready that I know there was a patient who was smoker. He had lot of periodontal problems. We treated his perio problem and before placing implant, I told him that on a risk scale you get 10 out of 10 marks because you are a smoker, you are diabetic also. He said, no problem doctor, I am ready to give my consent. Even if implant fails, it's okay. मैंने कहा ऐसे ही पेशेंट चाहिए हमको जो आराम से समझ भी लेते हैं कि they are at risk category. So consent is important. And written or informed consent we always take. We always inform patient and take their signature and impression, thumb impression. Local or systemic assessment of patient is very important. If there is a tendency amongst patients, especially in dentistry, they will go to cardiologist and they will tell him everything. जो नहीं है वो भी बताएंगे. But when they come to dentist, they will hide. क्योंकि मुझे लगता है उनको ये होता है एक ये फियर कि जब मोमेंट आई टेल देम अबाउट डायबिटीज डॉक्टर मुझे फट से टेस्ट के लिए भेज देगा, ये लाओ वो लाओ इसका लेटर लाओ. So they always try to hide their systemic problems. So you should assess thoroughly and that is why in my case I tell them कि मैं कंसेंट पे साइन ले रहा हूँ आपका कि आपको कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम नहीं है. कल को कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ तो यू आर रिस्पॉन्सिबल. देन दे स्टार्ट टेलिंग नहीं डॉक्टर थोड़ा मुझे डायबिटीज है. दे स्टार्ट टेलिंग. So better and never treat diabetes as a big risk factor. डायबिटीज देखते ऐसे कोई शॉप में जाने की जरूरत नहीं है. 10 में से 7 लोगों को 6 लोगों को इंडिया में 40 के बाद डायबिटीज होता ही है. इट्स सो कॉमन. इट्स जस्ट अल्टर्ड एंडोक्राइनल कंडीशन समझ लो. So any patient whose sugar level I estimate HbA1c ब्लड शुगर से मुझे कोई लेना देना नहीं है. वो 400 है कि 800 है आई डोंट केयर. मैं काउंट करता हूँ HbA1c ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन. वो अगर 7 के भी नीचे है वी ऑपरेट पेशेंट. 7 7.5 भी किया है. 8 9 10 वी डोंट टच जनरली. ओके. प्रोफाइलैक्टिक मेडिकेशंस. नाउ यू टेल मी फॉर सिंपल इम्प्लांट प्लेसमेंट एक 6 रीजन में इम्प्लांट डालना है. नॉर्मल पेशेंट है. Will you give him antibiotics or not? Will you give him antibiotic? Does patient have any infection? No. Then I give antibiotics without fail. Ideally it is not required. Let me tell you frankly. But we give it because we don't know during our procedure whether there will be contamination during our procedure or not. Afterwards, how patient is going to maintain the wound or not. So to be on safer side, we give it as a prophylaxis. I am not giving it as a part of treatment, but as a part of prophylaxis.
So we give plain antibiotics. You can give simple Mox 500. If patient is diabetic, treated case of periodontitis, suppurative conditions, then you can add Ciplox TZ or any ciprofloxacin with metronidazole combination or augmentin combination will work. Okay. Aseptic protocol before and during procedure, that is what we try to follow. एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल रखने की जरूरत नहीं है. वी आर नॉट डूइंग किडनी ट्रांसप्लांट. सिंपल इम्प्लांट प्लेसमेंट के लिए रूटीन इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइजेशन, प्री ऑपरेटिव माउथ वॉश रिंसिंग कराओ. एंटीबायोटिक आपने दिया है, लेट हिम यूज माउथ वॉश फॉर नेक्स्ट 2 weeks, इट्स मोर देन इनफ. And local or general anesthesia. Till date, I have not operated any implant patient in GA. I do lot of surgical work in GA, but till date, no anesthesia for GA for implant work. I could able to manage all my cases under LA only till date. What is surgical protocol? Pre-surgical antibiotic prophylaxis you should give because we are private practitioners. Okay, there is no one to protect us. College में hospital में चल जाता है, but as a practitioner I don't want to take any risk, so I prefer to give prophylaxis to all my patients. Patient drape and chair side aseptic protocol. We see to it that everything is cleaned properly. Our X-rays and everything, chair handles and all are cleaned properly with disinfectants. And rinsing with chlorhexidine gluconate. We have chlorhexidine gluconate, which we ask to every patient to gargle or rinse before surgical procedure. It's better. Perioral mopping with betadine or similar agents. We prefer betadine for perioral rinsing, but intraorally we never use betadine in implant patients. Why? The betadine should not be used for implant cases. Patient के mouth में irrigate नहीं करना है betadine से. When you are placing implant or osteotomy prepare हो गया उसके बाद, because betadine is proven to cause anti-osteoblastic activity. Third molar cases में it's okay. It's not a main concern, but around implant, I don't want anti-osteoblastic activity. So betadine is not recommended for intraoral rinsing or washing. Okay. Atraumatic implant site preparation, that I will tell you during hands-on next session कि drills का selection कैसे करना है. Bone की density के हिसाब से as well as according to your diameter, how will you play with your drill kit? And with one drill kit, you can put any implant available in our country, no problem. Avoid damage to tissue or vital structures. For that, I think during routine implant placement, it will never happen because you are doing osteotomy preparation for single implant. So there is no question of touching other vital organs. Only thing is if it's a close call case like mandibular canal is closed or you are operating close to sinus, then you have to be careful. Irrigation to avoid hitting and debris removal. When you are using implant kit or handpiece, by default there is a irrigation pump. Peristaltic pump होता है physio dispenser में. You get continuous flow of water or saline. So in cases where patients are diabetic and there are chances of infection in mouth, rather than saline, I use ciprofloxacin solution. So ciprofloxacin solution से हम लोग continuous irrigation करते हुए drill करते हैं, osteotomy prepare करते हैं. The implant must be placed in a healthy bone. That is very important. If there is any periapical or infection in the associated areas, that should be taken care during or before surgery. The surgical site should be kept aseptic. Generally, it's a very small procedure, not lasting for more than 30 minutes, 1 hour. You should wrap it up as soon as possible without, contaminating the surgical site. Careful patient handling is very important. Never forget that we work in general local anesthesia, which is most challenging as compared to GA. When you are operating in GA, there is a dedicated anesthetist who is taking care of patient. You have to just focus on operating the patient. I still remember many times when I operate in OT, I just forget and I keep telling, "आ करो." By default मुंह से निकलता है. Even if patient is under GA, तो एक आदत हो जाता है हम लोगों को. So careful handling is very important. Never forget that patient is in LA. He is listening. He can see everything. So try to make it effortless procedure so that patient will not build up stress and he will not wind up into syncope or other condition.
कंटिन्यूस कीप टॉकिंग विद पेशेंट. आई ऑलवेज इंस्ट्रक्ट पेशेंट कि काम करते हो आपको बीच में रुकना है, जस्ट लेफ्ट हैंड खड़ा कर दो, मैं रुक जाऊंगा. बीच बीच में पेशेंट को ब्रेक दो. नॉन स्टॉप ऐसे माउथ ओपन करके वर्क मत करने को बोलो. यू ट्राई टू डू दैट. ऐसे आ करके रखो, कितनी देर बाद देखो 5 मिनट बाद क्या होता है, यू विल कम टू नो. So without fail, I ask my patient after every 2-3 minutes to close mouth, take rest, then I continue. This is very important, and that's the difference between doing patient on chair and handling patient. Lot of people are skilled, but they may not handle their patient properly. So skill होना अलग बात है और patient का handling is totally different. How smoothly you handle patient, with what experience patient go out of your clinic, that will give you n number of referrals. Okay, so I did one patient, her name was Kalpana Chaute, 70-year-old. I placed 3 implants. She was so happy. She referred this another patient, 76-year-old from Dadar. I told you her story, 6 implant upper, 6 lower. And then that patient referred her friend, 82-year-old, but it was not possible to place implant in her mouth because she had lichen planus, very aggressive variety, and continuously her tissue was like inflamed. Gingiva and perioral tissue. So I said not possible. 82-year osteoporotic थी काफी and multiple systemic problem. We rejected that patient. Not possible to place implant in your case. But this is how you generate referrals. And in our practice, whenever see I am talking with, अभी मुझे एक call आया patient का. I was roaming here. The moment I received call, I told her I am out. Someone will call you. Immediately I took screenshot, send it to clinic. Someone called her and appointed her. So we see to it communication should be established. Patients are happy. We have all ready-made messages stored in our mobile. सब assistants के पास. We have e-card. E-card में जहाँ click करोगे वो call चला जाता है by default. 300 रुपए में बनता है सिर्फ e-card. आप सब बना लो. e-card अगर मैं आपको भेजूँ, उसमें मेरा वेबसाइट पे क्लिक करोगे, वेबसाइट ओपन हो जाएगा डायरेक्ट. गूगल पेज पे गूगल, फेसबुक मेरा फेसबुक पेज ओपन हो जाएगा. नंबर्स दे, नंबर पे सिर्फ पेशेंट टच करेगा, डायरेक्ट कॉल लगता है. बहुत अच्छा है. 300 रुपीज में बनता है. आई विल गिव यू नंबर ऑफ गाय. इट्स ब्यूटीफुल. So this is what we do. We never keep any loophole in communication. जब कई पेशेंट्स हमें अभी रेफरल प्रैक्टिस है पूरा, तो कॉल आता है डॉक्टर मुझे आना है, जैसे उसने फोन रखा इमीडिएट व्हाट्सएप पे उसे पूरा मैसेज डायरेक्शन सब जाता है. एंड असिस्टेंट विल कॉल देम बिफोर कमिंग ऑल्सो, एड्रेस है, कुछ प्रॉब्लम है. फॉर आफ्टर एवरी सर्जरी, वेदर इट्स इम्प्लांट और थर्ड मोलर और एनी एक्सट्रैक्शंस, पेशेंट को सुबह प्रोसीजर हुआ, शाम को कॉल जाता है, कैसे हो, डॉक्टर से बात करनी है. इट्स अ वेरी कॉमन प्रोटोकॉल. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी डूइंग इट. और रात को प्रोसीजर होता है तो अगले दिन मॉर्निंग पहले कॉल जाता है. डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग क्लिनिक में पेशेंट्स का रिव्यू मीटिंग होता है. सुबह जाते ही डॉक्टर एंड असिस्टेंट देखते कल पेशेंट कौन से हुए, लैब से किसी का काम आना बाकी. वी रिव्यू अवर एंटायर अपॉइंटमेंट्स. शाम को आते तो सुबह का रिव्यू करते, किस किस की प्रोसीजर हुई थी, कॉल किया क्या उनको, लैब से वर्क आया क्या. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई ऑलवेज से कि चेयर में हम जितना काम करते हैं डेंटिस्ट, उससे ज्यादा अराउंड द चेयर काम चलता है. एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, फाइनेंशियल पार्ट, मटेरियल्स का होता है, लैब के साथ डिस्कशंस होते हैं, लैब के साथ डील करना. वी हैव लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इन क्लिनिक एक्चुअली. यूज ऑफ हाई वैट सक्शन, गुड सक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लिनिक. And post-operative care and instructions are just like post-extraction. There is nothing new. Just ask patient to take good care, okay? Eating habits and all, soft diet for 2-3 days, antibiotics should be taken properly and all that. Good maintenance of oral hygiene. That's it. Lost time is never found again. By Benjamin Franklin. अगर आपने सर्जिकल प्रोसीजर करते वक्त डाउट है और वो वैसे ही रख दिया, तो आपको बाद में रिग्रेट करना पड़ेगा. आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम अ स्टूडेंट. ही टोल्ड मी सर मैंने केस किया, आप देखो कैसा लग रहा है. माउथ में एक्सरे पे ब्यूटीफुल लग रहा था, जिससे हम हमेशा बोलते हैं, क्लिनिकली ऐसे था माउथ में. आई सेड 7 रीजन में तुमने इम्प्लांट वेस्टिबुल में डाला है, पूरा चिक में, तो लोड कैसे करोगे, कॉम्प्लिकेशन होगा. कॉल पेशेंट, निकालो इम्प्लांट और करेक्ट करो. इन द इवनिंग ही कॉल्ड. मॉर्निंग में पेशेंट क्या था, शाम को बुलाया, वापस एले दिया, इम्प्लांट अनस्क्रू किया और वापस एंगल चेंज किया. He saved himself. Had he left that implant as it is, in future it would have caused big problems. इसलिए सर्जिकल प्रोसीजर करते हो अगर कोई डाउट है, करेक्ट इट विदाउट एनी डाउट. परसों मैं इम्प्लांट कर रहा था, 3 दिन पहले, नॉट परसों. तो इम्प्लांट करते मुझे लगा मैंने साइनस तो प्रॉपर लिफ्ट किया है, बट आई डोंट वांट टू टेक रिस्क.
इसलिए मैंने 13 mm का निकाल लिया और 10 mm का इम्प्लांट डाल दिया. बट द मोमेंट यू हैव डाउट, डू दैट टाइम ओनली, बिकॉज सर्जिकल प्रोसीजर एक ऐसी है जो हमें बार बार रिपीट नहीं करनी है. दैट इज लिटिल ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर पेशेंट. तो सर्जिकल प्रोसीजर में डाउट्स है, उसी वक्त करेक्ट करो उसको. ऐसे सोचो मत कि चल जाएगा या आई विल सी लेटर. वंस दैट इम्प्लांट ऑस्टियोइंटेग्रेट्स, थिंग्स बिकम इरिवर्सिबल. So one stage versus two stage surgery क्या होता है? One stage means what I do in one stage, I will place implant and immediately I will put gingival former. तो इधर advantage क्या मिल रहे हैं दो मुझे? When I put gingival former, I get good tissue topography around implant. Number one. Second, I do not need to give injection or perform any surgery or sutures after 2 months or 6 week, 8 week जब भी मैं बुला रहा हूँ. Patient को कोई सर्जरी का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा. इट विल बी लाइक कंप्लीटली पेनलेस. सो व्हेनेवर पॉसिबल आई प्रिफर टू पुट जिंजावल फॉर्मर इन ऑल माय केसेस. व्हाट इज टू स्टेज? एज अ बिगिनर इफ यू आर स्केयर्ड कि जिंजावल फॉर्मर नहीं लगाना है, रिस्क नहीं चाहिए, तो यू विल प्लेस इम्प्लांट, यू विल पुट कवर स्क्रू and then you will wait for 2 to 6 months. Ideally 2 to 3 months is more than enough. Okay? And then you will follow with prosthetic procedure, right? This is one stage versus two stage. It simply means when you perform surgery 2 times, it's a 2-stage placement or procedure. We'll see here. In one stage, what I will do, I will place implant and